नमस्कार दोस्तों, मेटलर्जी क्यूएन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप अगर इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथों साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हर एक नया नया अपडेट आपके पास पहुंचते रहे। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में एक्सट्रैक्टिव मेटलर्जी का 50 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, लिथाज इज केमिकली पीबीएस, पीबीओ, PBAG एलॉय या PBAG एलॉय। सही आंसर है ऑप्शन बी, PBO। लिथाज इज केमिकली PBO। नेक्स्ट दोस्तों, क्यूफिलेशन इज carried out for the purification of gold, purification of copper, extraction of silver and gold from lead या none of these। सही आंसर है ऑप्शन सी, extraction from silver and gold from lead। Cupellation is carried out for the extraction of silver and gold from lead। नेक्स्ट दोस्तों, जिंक इज नॉट resist to atmospheric corrosion, very malleable or ductile at ordinary temperature, या rollable into thin sheet under any circumstance, या able to be drawn into air in any case। सही आंसर है ऑप्शन बी, very malleable or ductile at ordinary temperature। Zinc is not very malleable or ductile at ordinary temperature। नेक्स्ट है दोस्तों, bark of the zinc is used mainly for the production of steel by galvanizing, production of zinc based die casting, या manufacture of pigment या manufacture of brushes। सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रोडक्शन ऑफ स्टील by galvanizing। Bark of the zinc is used mainly for the production of steel by galvanizing। Next, the largest consumption of zinc for alloy is in the making of brushes, bearing metal या bridging solder या die casting alloy। सही आंसर है ऑप्शन ए, brushes। The largest consumption of zinc for alloy is in the making of brushes। Next, which is an ore of zinc? Galena, azurite, calamine या cerussite। सही आंसर है ऑप्शन सी, calamine। Which is an ore of zinc? सही आंसर है ऑप्शन सी, calamine। नेक्स्ट, zinc percentage in pure mineral calamine is about 16, 28, 52 या 82। सही आंसर है ऑप्शन सी, 52। zinc percentage in pure mineral calamine is about 52। next, sphelerite an ore of zinc is and dash ore, oxide, सल्फाइड, कार्बोनेट या नाइट्राइट। सही आंसर है ऑप्शन बी, सल्फाइड और। स्फेलेराइट इज एन डैश और। सही आंसर है सल्फाइड। नेक्स्ट है दोस्तों, द मेन डिपॉजिट ऑफ जिंक और इन इंडिया इज इन झारखंड, बंगाल, उड़ीसा या राजस्थान। सही आंसर है ऑप्शन डी, राजस्थान। The main deposit of zinc ore in India is in Rajasthan। Next, zinc is extracted from its ore by dash method, pyrometallurgical, hydrometallurgical या both A and B या neither A nor B। सही आंसर है ऑप्शन सी, both A and B, मतलब pyrometallurgical and hydrometallurgical method। जिंक इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स और बाय डैश मेथड। सही आंसर है बोथ ए एंड बी, मतलब पायरोमेटलर्जिकल एंड हाइड्रोमेटलर्जिकल मेथड। नेक्स्ट है,
The main object in roasting zinc ore is to convert ZNS to ZNO या ZNO to ZNS या ZnCO3 to ZNO या ZnSO4 to ZNO। सही आंसर है ऑप्शन ए जिंक सल्फेट থেকে जिंक ऑक्साइड। The main object in roasting zinc ore is to convert ZnS to ZNO। Next, David Lloyd machine is used for the roasting of dash ore, lead, zinc या both A and B या neither A nor B। सही आंसर है ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, मतलब जिंक और लीड दोनों ही। डेविड lloyd machine is used for the roasting of dash ore, lead and zinc ore। Next, which of the following reaction involved in the reduction of zinc from its oxide is exothermic? सही आंसर है ऑप्शन डी none of these। Next, recovery of zinc from its ore is about dash percent, 60 to 62, 74 to 76 या 38 to 40 या 96 to 98। सही आंसर है ऑप्शन सी 38 to 40। Recovery of zinc from its ore is about 38 to 40%। Next, which is the single largest item of zinc lost in its smelting? Zinc remaining in retort, zinc absorption by retort या zinc vapor permeation through the retort या failure of zinc vapor to condense। सही आंसर है ऑप्शन ए जिंक रिमेनिंग इन retort। which is the single largest item of zinc lost in its smelting? सही आंसर है जिंक रिमेनिंग इन retort। नेक्स्ट, hard zinc is ZnFe alloy redistilled to produce pure zinc या used in the manufacture of स्टेरोमेटल या ऑल ऑफ एबव। सही आंसर है ऑप्शन डी ऑल ए बी एंड सी। हार्ड जिंक इज ए ZnFe alloy redistilled to produce pure zinc used in the manufacture of स्टेरोमेटल। सही आंसर है ऑप्शन डी ऑल ए बी एंड सी। नेक्स्ट है स्पेल्टर इज ए डैश concentrate, जिंक, lead, टिन या कॉपर। सही आंसर है ऑप्शन ए जिंक। स्पेल्टर इज ए जिंक कॉन्सेंट्रेट। नेक्स्ट, प्योरिटी ऑफ जिंक obtained by redistillation of spelter can be as high as dash percent। सही आंसर है ऑप्शन डी 99.9%। प्योरिटी ऑफ जिंक obtained by redistillation of spelter can be as high as 99%। नेक्स्ट, the formation of undesirable zinc ferrite which is insoluble in warm dilute H2SO4 during roasting of zinc or depend upon the temperature and duration of roasting। iron content of the ore, association of iron and zinc या डी all of above। सही आंसर है ऑप्शन डी all A B and C। the formation of undesirable zinc ferrite which is soluble in warm dilute H2SO4 during roasting of zinc or depend upon the temperature and duration of roasting। iron content of the ore, association of iron and zinc। सही आंसर है ऑप्शन डी ऑल ए बी एंड सी। नेक्स्ट दोस्तों, जिंक सल्फाइड रोस्ट्स एट ए टेम्परेचर ऑफ डैश डिग्री सेंटीग्रेड। सही आंसर है ऑप्शन बी ग्रेटर देन 600 डिग्री सेंटीग्रेड।
zinc sulfide roast at a temperature of greater than 600 degrees centigrade. Next, leaching of roasted zinc ore is done with dilute H2SO4, concentrated 99% H2SO4, या dilute HCl या dilute HNO3. सही आंसर है ऑप्शन ए dilute H2SO4. Leaching of roasted zinc ore is done with dilute H2SO4. Next, the tank employed for electrolysis of the solution obtained by leaching the roasted zinc ore is made of wood, concrete, either A or B या neither A nor B. सही आंसर है ऑप्शन सी either A or B. The tank employed for electrolysis of the solution obtained by leaching the roasted zinc ore is made of wood or concrete. Next, in zinc smelting blast furnace, dash of the furnace, preheated air is introduced both the top and bottom. Zinc vapor and other gases are withdrawn from the center, या both A and B या neither A nor B. सही आंसर है ऑप्शन सी both A and B. In zinc smelting blast furnace, dash of the furnace, preheated air is introduced both at the top and bottom, and zinc vapor and other gases are withdrawn from the center. Next, which of the following material require maximum electrical power when produced by either electrolysis or in electric furnace? Copper, aluminium, pig iron या zinc. सही आंसर है ऑप्शन बी aluminium. Which of the following material require maximum electrical power when produced by either electrolysis or in electric furnace? सही आंसर है ऑप्शन बी aluminium. Next, charge for the zinc smelting blast furnace is preheated to dash degree centigrade. सही आंसर है ऑप्शन सी 800 डिग्री सेंटीग्रेड. Charge for the zinc smelting blast furnace is preheated to dash degree centigrade. सही आंसर है 800 डिग्री सेंटीग्रेड. Next, percentage of zinc vapor in the gas coming out of zinc smelting blast furnace is about 1%, 5%, 25 या 45. सही आंसर है ऑप्शन बी 5%. The percentage of zinc vapor in the gas coming out of zinc smelting blast furnace is about 5%. Next, residual zinc percentage in the slag from zinc smelting blast furnace is about 1 to 5, 20 to 25, 40 to 45 या 60 to 65. सही आंसर है ऑप्शन ए 1 to 5. Residual zinc percentage in the slag from zinc smelting blast furnace is about 1 to 5. Next, pick out the wrong statement pertaining to electromotive series of metal. The noble material like Ag, Pt and Au, which are lowermost in the series, resist corrosion very strongly. Aluminium and magnesium, which are high in the series, resist reduction by carbon strongly and hence are obtained by high temperature electrolysis. A zinc being lower than iron in electromotive series provides effective protective coating against corrosion by galvanizing. या oxides of arsenic and Hg, which are low in the series and are metal decomposed by heat alone. सही आंसर है ऑप्शन सी. Pick out the wrong statement pertaining to electromotive series of metal. सही आंसर ऑप्शन सी.
Zinc being lower than iron in electromotive series provides effective protective coating against corrosion. Next, oxide of dash is not reducible by carbon in fuel fire furnace, lead, tin, copper या aluminium. सही आंसर है ऑप्शन डी एल्यूमिनियम. ऑक्साइड ऑफ डैश इज नॉट रिड्यूसिबल बाय कार्बन इन फ्यूल फायर फर्नेस. सही आंसर है एल्यूमिनियम. नेक्स्ट है व्हिच ऑफ फॉलोइंग मेटल occurs mostly in the form of sulfides, tin, aluminium, silver या iron. सही आंसर है ऑप्शन सी सिल्वर. Which of the following metal occur mostly in the form of sulfides? सही आंसर है सिल्वर. नेक्स्ट है Which of the following metals occur mostly in the form of oxide? Zinc, lead, जिंक, टिन या कॉपर. सही आंसर है ऑप्शन सी टिन. Which of the following metal occur mostly in the form of oxide? सही आंसर है टिन. नेक्स्ट है aluminium oxide present in iron ore is not reduced by carbon in the blast furnace because the desired metals is lower in the electromotive series of metal than the metal those oxide constitute the gangue. Next, melting point of aluminium is higher compared to that of iron. Melting point of aluminium is lower than that of iron या furnace temperature is less than the melting point of aluminium oxide. सही आंसर है ऑप्शन ए. Desired metal that is iron is lower in the electromotive series of metal than the metal whose oxide constitute the gangue, that is aluminium oxide. Aluminium oxide present in iron ore is not reduced by carbon in the blast furnace because the desired metal is lower in the electromotive series of metal than the metal whose oxide constitute the gangue. Next, which of the following is a non-metalliferous material? स्फेलेराइट, फ्लोस्फर, कैसिट्राइट या चाल्कोपाइराइट. सही आंसर है ऑप्शन बी फ्लोस्फर. Which of the following is a non-metalliferous mineral? सही आंसर है फ्लोस्फर. नेक्स्ट है which of the following is a metalliferous mineral? कैल्साइट, क्वार्टजाइट और स्फेलेराइट या नॉन ऑफ दिस. सही आंसर है ऑप्शन सी स्फेलेराइट. Which of the following is a metalliferous mineral? सही आंसर है स्फेलेराइट. नेक्स्ट है a mineral is called the ore of the metal if the metal percentage in the ore is above 25%, can be economically extracted from it या has a moderately low melting point या D is not brittle. सही आंसर है ऑप्शन बी. A mineral is called the ore of the metal if the metal can be economically extracted from it. Next है which of the following is not a mineral tracing operation? Roasting, combination, concentration, screening and classification. सही आंसर है ऑप्शन ए रोस्टिंग. Which of the following is not a mineral tracing operation? सही आंसर है रोस्टिंग. नेक्स्ट दोस्तों which of the following or concentration operation does not utilize the difference in densities? spiraling, jigging, tabling या froth flotation. सही आंसर है ऑप्शन डी froth flotation. Which of the following or concentration operation does not utilize the difference in densities? सही आंसर है froth flotation. नेक्स्ट है
Sulfatizing of ore is a dash process: smelting, roasting, calcining या distillation. सही आंसर है ऑप्शन सी, कैल्सिनेशन, कैल्साइनिंग. इस सल्फर सल्फाटाइजिंग ऑफ ओर इज ए डैश प्रोसेस. सही आंसर है कैल्साइनिंग. तो दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करिएगा. नेक्स्ट है हेट्रोजेनियस मिक्सचर ऑफ आर्सेनाइड ऑफ 2 और more metal resulting from smelting of essential ore is called the matte space, bimetal slag या none of these. सही आंसर है ऑप्शन बी, स्पेस. heterogeneous mixture of arsenides of 2 or more metal resulting from smelting of arsenical ore is called the space. next है those ore are called self-fluxing ore which have acidic gang, have basic gang या need no external flux या none of these. सही आंसर है ऑप्शन सी, no, need no external flux. those ore are called self-fluxing ore which need no external flux. next है which of the following is an acid flux? मैग्नीज ऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम फेराइड. सही आंसर है ऑप्शन बी, सिलिकॉन ऑक्साइड. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसिड फ्लक्स? सही आंसर है SiO2, ऑप्शन बी. नेक्स्ट है दोस्तों, न्यूट्रल फ्लक्स लाइक फ्लोराइड इंक्रीज द डैश ऑफ द स्लैग, बेसिटी, एसिडिटी, फ्लूइडिटी या नन ऑफ दिस. सही आंसर है ऑप्शन सी, फ्लूइडिटी. न्यूट्रल फ्लक्स लाइक फ्लोराइड इंक्रीज द फ्लूइडिटी ऑफ द स्लैग. नेक्स्ट है स्लैग इज नॉट यूज्ड फॉर मेकिंग सीमेंट, फर्टिलाइजर, रोड या बिल्डिंग्स. सही आंसर है ऑप्शन डी, बिल्डिंग्स. स्लैग इज नॉट यूज्ड फॉर मेकिंग बिल्डिंग. नेक्स्ट है dash ton of bauxite is required to produce 1 ton of aluminium. सही आंसर है ऑप्शन सी, 5.5 tons. dash ton of bauxite is required to produce 1 ton of aluminium. सही आंसर है 5.5 tons. नेक्स्ट है aluminium industry is a highly electrical energy intensive industry. Specific electrical energy consumption in aluminium making is about 10 kilowatt hour per ton of aluminium. सही आंसर है ऑप्शन सी, 21,000 kilowatt hour per ton of aluminium. Aluminium industry is a highly electrical energy intensive industry. Specific electrical energy consumption in aluminium making is about 21,000 per kilowatt hour per ton of aluminium. नेक्स्ट है दोस्तों, aluminium is produced by the electrolysis of a solution of alumina in fused cryolite. The chemical formula of cryolite is. सही आंसर है ऑप्शन ए, Na3Alf6. Aluminium is produced by the electrolysis of a solution of aluminum in fused cryolite. The chemical formula of cryolite is Na3Alf6. Next, Bias process is meant for the reduction of Al2O3 to aluminium, प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइड या रिफाइनिंग ऑफ एल्यूमिनियम या नन ऑफ दीज. सही आंसर है ऑप्शन बी, प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइड. बायर्स प्रोसेस इज मीन्ट फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइड. नेक्स्ट है ड्यूरिंग रिफाइनिंग ऑफ एल्यूमिनियम इज हुप सेल 1 ton of aluminium is produced from about 10 ton of alumina. सही आंसर है ऑप्शन ए, 2 tons. During refining of aluminium in Hopes Hell, 1 ton of aluminium is produced from about
2 tons of aluminum. Next, purity of electrical grade aluminum should be greater than equal to %. सही आंसर है ऑप्शन डी 99%. Purity of electrical grade aluminum should be greater than equal to 99%. Next, voltage employed in the aluminum reduction cell is about -volt. सही आंसर है ऑप्शन ए 5 to 7 volt. Voltage employed in the aluminum reduction cell is about -volt. सही आंसर है 5 to 7 volt. Next, which of the following pure mineral of copper contains least percentage of copper? चाल्कोपाइराइट, चाल्कोसाइट, क्यूप्राइट या मोलासाइट? सही आंसर है ऑप्शन ए चाल्कोपाइराइट. Which of the following pure mineral of copper contain least percentage of copper? सही आंसर है ऑप्शन ए चाल्कोपाइराइट. Which of the following is not a sulfide ore of copper? कॉपर का सल्फाइड कौन सा नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन बी क्यूप्राइट. तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में. जय हिंद.